हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट, अ शो जहां हम हर बात पे बात करते हैं। साल खत्म होने वाला है एंड लाइक क्लॉकवर्क वी आर सीइंग सो मेनी ईयर एंड लिस्ट्स। यस, द बेस्ट दिस ऑफ 2023, द बेस्ट मीम्स ऑफ 2023, द बेस्ट शोज ऑफ 2023। उसी की तरह टुडे आई हैव विद यू द बेस्ट फिल्म्स दैट आई वॉच्ड इन 2023। अब यार ये लिस्ट जो होती हैं, दीज कैन गेट थोड़ा बोरिंग, these can get थोड़ा repetitive, but I will make sure that this is the most exciting year-end list that you will ever see, because this is not an exhaustive list of the best films that there are, और मतलब top 5 की list है तो top 6 वाली है वो घटिया मूवी, ऐसी कोई list नहीं है ये। These are just some films जो मैंने इस साल देखी and they literally blew me away. So maybe you will get some recommendations out of this list. Maybe some of these movies are in your lists as well. So let's go. First, let us talk about some of the best films in the world cinema category that I saw this year. So number 5 on my pick is Wes Anderson's Asteroid City. I think the best thing I like about that film is obviously the whole Wes Anderson-ness of it, because it is so aesthetically shot. It is so perfect जो एक वेस एंडरसन की मूवी ही हो सकती है मेरे ख्याल से। लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, बारबी वॉज वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसमें वो बात नहीं थी। एंड एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ आई फाउंड इट टू बी अ वेरी नाइस कॉन्वर्जेशन पॉइंट विद माई सेल्फ व्हेन आई एम डाइसेक्टिंग द फिल्म अपने अंदर कि अच्छा ये इस मूवी का, इस शॉट का क्या मतलब था, वो एलियन आया था उसका क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था। द नेक्स्ट फिल्म ऑन माई लिस्ट इज डम मनी, डायरेक्टेड बाय क्रेग गिलिस्पी. Now this was a थोड़ा sleeper kind of a movie because ज़्यादा इस movie के बारे में बात नहीं हुई, but it was the biopic of the whole GameStop saga. And the best thing I like about this film is the whole authenticity that it carries when it comes to the subject matter, but at the same time it treats it like a typical जो 2007 की comedies होती थी ना, where it's some absurdist thing is going on, there is some random potty humor is going on, कुछ sex jokes चल रहा है, but at the core it is about this whole journey of the GameStop saga. So I think that's a definite recommendation from my list and one of the best films I saw this year. Okay, so after that, on number 3 of my world cinema list is an Estonian film. The film's name is Smokes on a Sisterhood. It's directed by Anna Hintz and it's an Estonian film. It's also an entry in this year's Oscars, in the next year's Oscars for the best international film. And it's a documentary about a very interesting tradition that happens in Estonia, जहाँ पे बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती हैं और दे गो टू लाइक दिस हिल स्टेशन काइंड ऑफ अ प्लेस, बहुत एक सेक्लूडेड जगह जहाँ पे कोई नहीं है, देयर इज नो सिविलाइजेशन, एंड दे लिटरली बेयर देयर सोल्स आउट टू ईच अदर. दे गो इन टू दिस सोना जहाँ पे वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को हीलिंग करते हैं बेसिकली. एंड समबडी देयर इज अ सेक्शुअल अब्यूज सर्वाइवर, समबडी देयर हैज लॉस्ट देयर पेरेंट, समबडी हैज लॉस्ट देयर चिल्ड्रन, समबडी हैज हैड अ मिसकैरेज. और ये सब औरतें बेसिकली अपना ग्रीफ शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ. हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मूवीज में न्यूडिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. दिस फिल्म 90% ऑफ द फिल्म इज इन द न्यूड, बट not once did it sort of feel like I'm being titillated. Not once did it feel like that the gaze is going somewhere where it's not supposed to. It was handled so brilliantly for a documentary even, because documentaries में you have this leeway कि अच्छा हाँ रियल लाइफ चल रही है तो घुसा दो, मतलब प्राइवेसी इंट्रूड करके हर जगह घुसा दो कैमरा, बट ऐसा इस फिल्म में नहीं किया. सो इफ हार्ड हिटिंग फिल्म्स लाइक दीज इज समथिंग दैट्स योर कप ऑफ टी, स्मोक्स ऑन अ सिस्टरहुड इज डेफिनेटली a recommendation. So on number 2 I have Ari Aster's Beau is Afraid. Again मैंने थिएटर में देखी वो मूवी, और उसके बाद जब दोबारा मैंने देखी, तिबारा देखी, फिर चौबारा देखी, and I was like कि okay, why is Ari Aster making a film on my life? It's just a film about a person who is in a very weird mind space. It's जैसे कुछ फिल्में होती है ना कि जो तुम्हें फील कराती हैं what love is like. This film makes you feel what having anxiety is like. Matlab, the film literally is a physical on-screen embodiment of a very long drawn anxiety attack. But my favoriteest film of this year is, no surprises for guessing, Oppenheimer, guys. Even before the film I was a huge Oppenheimer fan. मेरे को वो इंसान ही पसंद है. I really liked what his views were on quantum physics, and उस समय पे having this paradigm shifting thought कि अच्छा क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज़ भी कोई एग्जिस्ट कर सकती है, फिर उसको अमेरिका में लाना, उसको एटम बम में यूज़ करना. बट द फैक्ट दैट नोलन चोज टू टेल दिस स्टोरी, बट
it was not actually about Oppenheimer. It was not actually about the atom bomb. It was not actually about the World War, right? It was about Nolan's fears of what will happen if this power that we have, what will happen if it goes unchecked, right? This is something that just Nolan can do कि इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में इतनी simple movie बनाना. Like Interstellar, perfect example. तुम उसमें से स्पेस हटा दो, ब्लैक होल्स हटा दो, इवेंट होराइजन हटा दो, सब हटा दो, टाइम ट्रैवल सब कुछ हटा दो. एट द एंड इट्स अ फादर डॉटर स्टोरी. तुम इंसेप्शन में से सब ड्रीम लेवल सब कुछ हटा दो. एट द एंड इट इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु वांट्स टू गो होम. आई ऑनेस्टली थिंक दैट इट इज Nolan's best film to date. If it doesn't win all Oscars this year, I will be offended, especially the music. Oof, Ludwig Göransson, beautiful music, and the way he has used the violin and different instruments for different parts in the, you know, the whole atomic structure. Oh, I have a पूरा मेरे पास 1 घंटे का एपिसोड पड़ा हुआ है about Oppenheimer, because वो मूवी शायद मैंने 6 बार देखी है, and I am absolutely in love with it. Also, online there are a lot of chronological cuts of Oppenheimer, because Oppenheimer, as you know, in classic Nolan style, it's edited out of time. It's non-linear narrative. बहुत सारे लोगों को कीड़ा था, मेरे को भी था स्टार्टिंग में, by the way, कि हम लोग chronologically कट करेंगे Oppenheimer को और उसका एक एडिट देखेंगे. तो मैंने ऑनलाइन एक वो एडिट भी देखा था, एंड इट इज़ अ डिफरेंट मूवी ऑल टुगेदर. सो आई थिंक Oppenheimer से तुम जितना एंगेज कर सकते हो इस साल खत्म होने से पहले कर लो, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मूवी. ओके, अब आते हैं अपनी ज़मीन की बात करने की. इंडिया से निकली हुई बेस्ट फिल्में कौन सी हैं? द नंबर 5 पिक ऑन माई लिस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023 इज सिर्फ एक बंदा, डायरेक्टेड बाय अपूर्व सिंह खड़की. इट ऑब्वियसली हैज सम रियली अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय मनोज बाजपेयी, बाय सूरज मोहन कुलश्रेष्ठ हु प्लेज बाबा, एंड बाय अद्रिया सिन्हा हु प्लेज न्यू. But even more than the performances, I think the writing of the film really handled this whole conflict of what would you do if somebody who you consider God ends up betraying you and betraying you like that, right? तो उस चीज़ की वजह से मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी. I think it is streaming on Z5 and it was, I think, one of the first movies जो OTT के बाद थिएटर में रिलीज हुई थी बिकॉज ऑफ सो मच पब्लिक डिमांड एंड ऑल. तो उस चीज़ के लिए भाई तालियां बनती हैं. और नंबर 4 आई हैव अ प्रीटी ऑफ बीट फिल्म जिसके बारे में मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था. मैंने मूवी एक फिल्म फेस्टिवल में देखी एंड it has become one of my favorite films of this year. The film is called Dilli Dark. It's directed by Dibakar Das Roy. और इस मूवी ने ना मेरे को फर्स्ट जो फुकरे आई थी ना उस मूवी की याद दिला दी, या डेली बेली जो आई थी उसकी याद दिला दी, बिकॉज इट्स सच अ रूटेड स्टोरी. द फिल्म इज अबाउट अ नाइजीरियन बॉय हु लिव्स इन डेली, हु इज डूइंग हिज MBA from there, और it focuses on the whole African community that is a very huge part of Delhi, and उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं विद रेसिज्म, उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं विद फाइंडिंग अ जॉब, फाइंडिंग लव इन अ कंट्री विच इज सो ऑब्सेस्ड विद फेयरनेस एंड ऑल ऑफ दैट. बहुत ही लाइट वे में उसको टैकल किया है. इट हैज़ सम रियली अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय सैमुअल रॉबिन्सन हु प्लेज द लीड कैरेक्टर माइकल एंड शांतनु अनम. It also has a small role from the Quint's very own Stuti, who used to do film reviews on the Quint. उनका भी बहुत बढ़िया एक रोल है. She becomes a devotee in that film. बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने. And I think it's a overall very fun film, because usually हम जब ऐसे festival type फिल्में देखते हैं बहुत drab, बहुत रोने धोने वाली movies देखते हैं. So it was a great change for me personally to watch just a fun एकदम comedy movie है, but वो at the end कुछ बात भी करके जा रही है. So I think दिल्ली डार्क जहाँ पे भी आपको मिले OTTs में, theatrically कहीं पे भी मिले, make sure you go and watch this film. On number 3, I have a film that was released pretty recently. I think it's still running in theaters. It is one of the most important films that have been made in a very long time. The film that I'm talking about is Joram by Devashish Makhija. Why I like that film so much is because it really makes me, somebody who's obviously an outsider in this whole conversation, sort of look into the lives of people who are considered marginalized, right? The story of the film revolves around Dasru, a tribal from Jharkhand who has settled in Mumbai, and he's accused of killing his wife, but he has actually not done it. तो वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी छोटी सी बेटी जिसका नाम है जोरम उसको अपने हाथ में लेके, और Zishan Ayub, who plays a cop, he's catching him. As simple as that. It just made you feel very good to be a Hindi cinema viewer. Okay, the next film that we have on this list is made by one of my favorite directors. He's the reason why I decided to go to FTI and all of that. I decided that मेरे को भी कभी लाइफ में फिल्म मेकर बनना है. The film that I'm talking about is 12th Fail by Vidhu Vinod Chopra. If I can just define that film in one word for you, it's just classic. It's classical textbook cinema.
because it's such a slow film. It's using very minimalistic camera movements, it's using very minimalistic sound design tropes, and it just feels like कि ये movie आज से 50 साल पहले बनी है, because वो बंदा आज भी क्रॉस फेड्स यूज कर रहा है, जो कि एडिटिंग की भाषा में गंदे कट्स माने जाते हैं. लाइक यू आर नॉट सपोज टू बी क्रॉस फेडिंग बिटवीन टू सीन्स, बट पहले बहुत होता था ये. सो इट्स लाइक, आई वुड से इट्स अ वेरी प्योर क्लासिकल फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस एंड फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. ऑब्वियसली इट्स अ स्टोरी ऑफ एन IAS ऑफिसर जो 12वीं में फेल हो जाता है, बट उसके बाद उसको एक पुलिस वाला सिखाता है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है, मेरे जैसा बनना है, तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी. और बस वो इस एक चीज़ को दिमाग पे लगा लेता है कि भाई अब मैं अपनी ज़िंदगी में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करूंगा, बट बिना बेईमानी करे. दैट समवेयर हेल्प्स टू प्रिजर्व द प्योरिटी इन ऑल ऑफ अस एज पीपल. जो सब लोग कहते हैं ना कि अच्छा आज के टाइम पे वो प्योरिटी, वो इनोसेंस खोती जा रही है. सो इट्स व्हेन यू वॉच फिल्म्स लाइक दीज यू रियलाइज कि ओके हाँ, मतलब एक्चुअली में हम लोग इतने ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कि चीटिंग नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, दैट बिकम्स सो एलियन एंड हार्ट टचिंग टू मी. सो वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है इस मूवी के बारे में. ऑब्वियसली लाइक विक्रांत मैसीज परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन. जस्ट गो इन अ डार्क रूम, sit down and just surrender to the vision of the director, और तभी तुम्हें उस मूवी का बेस्ट एक्सपीरियंस आएगा, because I am damn sure by the end it'll all make sense to you. When the last shot comes of the movie, it all makes sense for you. So 12th Fail is a definite recommendation from my end. Okay, now the best film that I think that came in 2023. It's technically not a film, like it's not a feature film, it's not as dramatic. इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, बट मैं ऑनेस्टली उस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री कंसिडर नहीं करता. मैंने इसी स्टूडियो में उसके डायरेक्टर से भी बोला है कि तुम अपनी मार्केटिंग गलत कर रहे हो, इसको डॉक्यूमेंट्री मत बोलो, ये ड्रामा है. द फिल्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वाइल वी वॉच्ड, डायरेक्टेड बाय विनय शुक्ला, एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल मूवी. Leave aside the fact that it's documenting the death of journalism and it is talking about an important issue, वो सब हटा दो. मैं मान लो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ही नहीं. Even then, it is such a hugely dramatic movie. Unwilling hero होता है ना, कि एक हीरो है, वो हीरो एक्चुअली में है, बट उसको पता नहीं है कि वो हीरो है, तो उसके क्या चैलेंजेस होते हैं. इट्स अबाउट दैट एसेंशियली. अगर तुम्हें रवीश की जर्नी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें NDTV की जर्नी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इट्स सच अ ड्रामेटिक मूवी एंड इट्स जस्ट अ फन वॉच. नाउ एड द फैक्ट दैट इट इज टॉकिंग अबाउट सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट, कि मीडिया के साथ ये हो रहा है while we are all watching. Add on top of the fact कि it is a documentary. So the kind of shots that you see, the kind of scenes that you see, the kind of access that these guys have gotten is something else. मतलब it is literally कि NDTV के ऑफिस में अगर एक मक्खी बैठी हुई होगी, उसको क्या दिख रहा होगा. It's literally that. And yes, this was my list of some of the best films I saw in 2023. As I said in the beginning, 2023 was a very good year for cinema, I would say. I wasn't a fan of the web shows that were happening because मेरा हो गया भाई, क्राइम से हो गया. हर शो में कुछ ना कुछ क्राइम, कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो सब नहीं झेल सकता मैं. Whatever happened post the pandemic and with films like Jawan and Pathan and now even Animal working so well, I think 2024 brings more hope in me. साथ में films like Agra and Kennedy and All India Rank are slated for release. So मतलब काफ़ी अच्छा balanced year होने वाला है 2024. And yes, wishing you a very happy new year. Keep watching movies, keep connecting with people like me. This was Prateek. I'll see you in the next one. Let's continue the conversation in the comments.